ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य पाठ अंतर्गत अष्टम स्कंद को 17औं अध्याय को पाठ आरंभ हुन गइरहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्नुतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाः मतन्द्रता चिन्तयन्ते गया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् प्रगृहेन्द्रियदुष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथिः मनसैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार पयोव्रतं तस्याः प्रादुरभूतात भगवानादिपुरुष पीतवासा चतुर्बाहुः शङ्खचक्र गदाधर तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोताय सादरं ननाम भुविकायेन दण्डवदप्रीतिविह्वला सताय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता नोत्सय आनन्दजलाकुलेक्षण बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिः तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेवधू प्रीत्या सनिर्गतगदया गिराहरिं तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपसमोदयाद्य सम्नः कृति स भगवन्नसि दीननाथ विश्वाय विश्वभवनतिथि संयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषाक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय सत्सदुपभृमितपूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। आयु परं वपुरवीठमतुल्यलक्ष्मीर्द्यो भूरसः सकलयोगगुणस्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात् तत्तो नृणां किमु सपत्नजयाधिराशिः। श्रीशुक उवाच अदितेवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेक्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत। श्रीभगवानुवाच देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितं यत्सपत्नैरितश्रीणं च स्वधामद तान् विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान् प्रतिलब्ध जय श्रीभिः पुत्रैरिच सुभाषितुम् इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनैर्हतानं युधि विद्विषां स्त्रियो रुदन्तिरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखितः आत्मजान् सुसमृद्धान् त्वं प्रत्यारितयश स्त्रियः नागपीठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि प्रायो दोनाते सुरयूतनाथा अपारणीया इति देवी मे मतिः यत्तेन कुलेश्वरभिः प्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनं नारति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् त्वयार्चितः साहमपत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः स्वंसेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गुप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषं मां च भावयति पत्यापेवं रूपमवस्थितं नैतत्परस्माख्येयं पृष्ठयापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतं। श्रीशुक उवाच एतावदुक्ता भगवानस्तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरे जन्मात्मनि प्रभोः उपाधावत् पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत् स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरं संयमितते क्षणः सोदित्यां वीर्यमादत्त तपसा चिरसंवृतं समाहितमनः राजन् दारुण्यग्निं यथानिलः अदितिर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भभिज्ञाय समीरे गुह्यनामभिः ब्रह्मोवाच जय ऋगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपीठाय शिविविष्टाय विष्णवे
त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यमनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः कालो भवानाक्षिपति स विश्वं श्रुतो यथान्तः पतितं गभीरं त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः दिवौकसां देवदिवसुतानां परायणं नौरिव मज्जतुप्सु त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः दिवौकसां देवदिवसुतानां परायणं नौरिव मज्जतुप्सु हरि ओं तत्सदिति श्रीमदावधूतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्याय हरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को जय जय राधे।